Hello everyone, I'm Sudipta, welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you all? Tell me. Just a minute. Okay.
So hello everyone, audio video clear achi? Please let me know that. Chaitanya Pradhan, glad to see you again and again in my class. Thank you for being present. Okay, so चलो start करिबा class. आपण मान जेमती जानी चंती बॉटनी रो पार्ट आज रहिबो एंड दिस इज बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री को कवर अप करिबा पूर्वरो आपण मान को देखे देबा को चाहिबी गाइस. टीचिंग एग्जामिनेशन रो किछि भी आपण नौचंती बैच परचेज करूछंती द वैलिडिटी इज 1 ईयर एंड द प्राइस इज 1499 एंड आपण आर्ट्स नियंतु पीसीएम नियंतु या फिर सीबीजेड नियंतु द प्राइस विल बी द सेम. ओके, तो हमरो को दिन कौन कौन क्लास रहुची जस्ट लेफ्ट कर दियंतु टिके फिजिक्स को. वर्तमान हमरो फिजिक्स रा क्लास स्टार्ट हेइनी बट हमरो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री अगेन बॉटनी को डे रे अछि आपण मान का आगे रे अछि एंड दिस इज द एप्लीकेशन क्लास जोटा कि ऑलरेडी हमरो स्टार्ट हे सारी छी ऐप रे. ओके, फॉर द पीसीएम एंड सीबीजेड इनिशियली हमरो जूलॉजी एंड केमिस्ट्री स्टार्ट हे छी. आफ्टर दैट जूलॉजी सरला फॉर आपनकर बॉटनी स्टार्ट हो. ओके ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर ताहले अछि. हमें क्लास स्टार्ट करी पारिबा ना कि डेफिनेटली. चलो, so this is the timetable for this week with the arts batch. This was the PCM and CBZ and this was the arts. जेमती कि आपण मान देखुथुवे this is the YouTube session. जेमती कि इंग्लिश 8:30 रे गोटे स्लॉट रहउची जोतरे कि इंग्लिश जीएस माने पिंकू सर एंड आपनकर केडी सर अल्टरनेटिव डे रे नउचंती इंग्लिश जीएस. आफ्टर दैट 11 am रे आपण देखिबे ओडिया सीडीपी ओडिया जीएस सीडीपी जीएस. तो एई टाइप रे रहउची कर चंदन सर शताब्दी मैम एंड सुदीप्ता मैम कर. am I clear? किछि जानि पारुछो? ओके, फर्स्ट टिके रुआ लिंक टा शेयर कर दूची देन विल स्टार्ट द क्लास. ओके, लुका डॉन किक. प्रणाम गाइस, प्रणाम. तो स्टार्ट करिबा. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस क्लास इज ओके. सो मते कुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. आमे कहा को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहूचे मते टिके कंफर्म करै परिबो कि मैम आमे कहा को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहूचे. टेल मी ऑप्शन कौन अछि ना मैम. फर्स्ट हमर अछि मोनोसैकेराइड्स. एटा हमर राइट आंसर हबो कि मते कुआ. Building block of proteins, guys. What's the question here? The question is the building block of proteins. आमे कहा को कहूचे. Tell me what will be the right answer. Give me. Good evening everyone. Option B, very good Luca. Yes, that is the amino acid. But why not monosaccharides? केबे आपण माने को माइंड रासी छी कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन को हमें मोनोसैकेराइड्स को काहे की कहि परिबा नाही. बिकॉज़ हमें मोनोसैकेराइड्स रा कोन कोन फॉर्म हे परिबो. गाइस, these are the simple sugars. लाइक हमें कहि परिबा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म रे हमें कोन कहि परिबा ना मैम. हमको हमें कहि परिबा these are the glucose and with that this was the fructose. Okay, so glucose and fructose को मिसई के हमें ताको कोन कहूचे ना मैम. दिस इज द सिंपल सुगर बोलिया को हमें कहूचे कि ना मोनोसैकेराइड्स. am I clear? so they are the building block of कोन जति एठी पचारि छि कोन ना building block of protein पचारि छि आपण माने कहउछन this is the amino acid. जति building block of carbohydrates पचारि थांता हां ग्लूकोज माने पाउडर वाला जोटा त माने सनस्ट्रोक न हेबा पे खरा दिने पियो सुनल सेटा. तो
मोनोसैकेराइड्स जदि आपण मानकु पचारि थांदा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कोन पचारि थांदा ना मैम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देन आमे कहि थांदे दिस इज द मोनोसैकेराइड्स कोन पचारिबो ना बिल्डिंग खाली कार्बोहाइड्रेट्स लिखि दोची तो माने जानि परिबो दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ओके जदि कार्ब्स कथा पचारिला कार्बोहाइड्रेट्स कथा पचारिला ताहाले तार बिल्डिंग ब्लॉक हमें कोन कहबा ना दिस इज द मोनोसैकेराइड एग्जांपल आपण कि नै परिबे लाइक समवेयर when you eat the sugar it breaks down into the glucose which is a monosaccharide like हमें कोन सुगर को खाउचे देन सेटा हमर कोन मैम नेक्स्ट क्लास केते टाइम रे हबो नेक्स्ट क्लास केते टाइम रे हबो मींस नेक्स्ट या परे 6टा रे क्लास सरियल ना मोर 5टा 6टा अछि देन हमर 6टा रे 7टा अछि हैला तो एग्जांपल आपण नै परिबे जते बेले आपण ग्लूकोज खाउसंती से हमर कोन होची ना मैम ताको ब्रेक डाउन होची सॉरी जते बेले हम सुगर खाउचे डायरेक्ट हमें सुगर के इंटेक करछे से ब्रेक डाउन होची इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज व्हिच इज द मोनोसैकेराइड फॉर्म देन मते को राइट आंसर अमीनो एसिड हबो ताले हम जानचे कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ व्हाट आपण मानकु को एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन पछारिबो नो मैटर द आपण को सीबीसेट नियंतु लाइक पीसीएम तो छाड़ी दियो बट जे कोन से वन डे एग्जामिनेशन है दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जोडा एग्जामिनेशन आसी ही जाय कि व्हाट इज कंसीडर्ड एज द building block of protein or this is known as what na amino acids are the proteins are made up of proteins are the made up of what amino acids एति कहि परिबा so each amino acid has two special group ताको हमें कोन कहउचे सबु amino acid रो दीटा स्पेशल ग्रुप गाइस थाए ताको हमें कोन कहि परिबा ना मैम दैट इज द amino group कोन कहउचे ना amino group that means NH3 गोटे आसुची अमीनो हे गला ना NH2 सॉरी NH2 माइनस गोटे माइनस NH2 गोटे आसुची देन आ गोटे कोन आसुची ना कार्बोक्सिल ग्रुप आ गोटे रहउची कार्बोक्सिल ग्रुप ए कार्बोक्सिल ग्रुप को हमें कोन कहउचे ना मैम दिस इज द COOH कोन ना COOH को हमें कंसीडर करचे कार्बोक्सिल ग्रुप आ जो NH2 रहिला ताको हमें कोन कहउचे ना मैम अमीनो ग्रुप कोन दैट इज द अमीनो ग्रुप हैला am I clear कोठी यूज हुए अमीनो एसिड्स में देखो वैरायटी हमें कहि परिबा यस सो अमीनो ग्रुप रहिला एंड कार्बोक्सिल ग्रुप रहिला कार्बोक्सिल हैला अमीनो एसिड्स आपण मानकर डिफरेंट टाइप रे जेमिति कि आपण कहि परिबे अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिल ग्रुप रे मिसी कि अमीनो एसिड्स जॉइन होंदी टुगेदर टू फॉर्म द पेप्टाइड बॉन्ड्स कोथरे ना प्रोटीन जते बेले फॉर्म करे ता पूर्वरु गोटे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुए और से जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करिबार हमर किए हेल्प करे ना बोथ द अमीनो एसिड एंड द कार्बोक्सिल ग्रुप क्लियर एग्जांपल आपण माने नै परिबे कोन ना हीमोग्लोबिन फॉर एग्जांपल आपण माने हीमोग्लोबिन नियंतु मेल्ट कोल्ड सोनल फास्ट थिंग मते कुह तमे कोथिरो पीसीएम ना सीबीसेट रो so example आपण नै परिबे the hemoglobin an important protein in the blood that you all know about right so is the made of 100 of amino acids जो hemoglobin अछि जहा को हमें कहउची this is present रहउची hemoglobin कोथरे blood रहउची and hemoglobin itself made up of what na 100 of amino acids रे तयारी हे थाए clear से हिस्ट्री रो पिला आ एठी कोन करूछ ओसीएस असले ये तो मते को फैटी एसिड्स कंसीडर हमें कोन करि परिबा दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कोन जदी फैट्स पचारिबो जेमिति कार्बोहाइड्रेट्स रो पचारिले आपण माने कोन कहले ना मैम मोनोसैकेराइड्स प्रोटीन रो पचारिले अमीनो एसिड कहिछ जदी फैट्स रो पचारिला बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट ना बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैट्स पचारिला ताहाले कोन हमें फैटी एसिड्स कहि परिबा कि ताकू हमें फैट्स हैला या फिर आपण माने को कोन पचारिबा रो इंस्टेड ऑफ फैट्स जदी आपण माने को लिपिड्स भी पचारिला जदी इंस्टेड ऑफ फैट लिपिड्स पचारिला ताहाले हां तो फैटी एसिड्स हमें कहबा कहार बिल्डिंग ब्लॉक ना फैट्स एंड लिपिड्स जदी पचारिला सो एग्जांपल हमें कहि परिबा बटर एंड ऑयल दैट कंटेन द फैटी एसिड्स यस और नो यस मैम देन मते को ए जो न्यूक्लियोटाइड्स को हमें कोन कहि परिबा ना दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ व्हाट न्यूक्लियोटाइड हेले न्यूक्लिक एसिड रो जेमिति कि डीएनए एंड आरएनए जदी आपण मानकर क्वेश्चन ने आसिला which is considered as a building block of DNA, RNA or what? ना or nucleic acid. और guys nucleic acid जदी पचारिला ताहाले आपण माने कोन न्यूक्लियोटाइड सहित कनेक्ट करि परिबे कि करि परिबे ना नहीं मते कुह हां फैटी चर्बीडा जरा तुम सब माने मटन खाई के सब कोन पछपटे आगपटे सब बाहर करछ ना कि हां सेउडा चलो
सो ए जो न्यूक्लिक एसिड्स डीएनए एंड आरएनए रे रहुची ताको हमें कहि परिबा कि दीज आर द ईच न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 पार्ट्स कोन होची ना गोटे होची सुगर गोटे होची फॉस्फेट एंड गोटे होची बेस कोन रहिबो ना मैम न्यूक्लियोटाइड्स हैज 3 नंबर्स वन इज व्हाट ना सुगर सेकंड वन इज फॉस्फरस एंड थर्ड वन इज व्हाट ना मैम दिस इज द बेस कोन नाइट्रोजिनस बेस हमें जो कहूचे डीएनए रे चारिटा रहुची कोन ATCG एंड सेतरे AUCG एतिकी यूरासिल बदल रे थायमिन आपनकर हुए एतिकी रिलेटेबल करि पारुछो वेरी गुड एतिकी बुझी पारला व्हाट इज मोनोसैकेराइड व्हाट इज अमीनोसैकेराइड व्हाट इज ताको अदरवाइज हमें कोन कहूचे फैटी एसिड को अदरवाइज कोन कहूचे कोटा कहार बिल्डिंग ब्लॉक एतिकी क्लियर हबो त चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू मते कुह the genetic material in most living organisms is genetic material in most living organisms is what DNA sure very good Luka yes that is the DNA कौन पाई ना मैम DNA is what the full form कौन मतलब लिखी दियो ना deoxyribose nucleic acid and हमें कहबा this stores the genetic material the genetic information it is like the instruction book of the cell हमें को कौन कहि परिबा ना मैम this is we consider this as a instruction book of the cell it instruction book of the cell can you consider this yes ma'am we can consider this yes or no yes स्पेलिंग गुडा एते बढ़िया कि सोनल तमे करूछ मते लाज लागुची कि पिंकू सर तुमको कोन पढौछन सो एग्जांपल आपण माने डीएनए रे कहि परिबा कि जेमिति कि एग्जांपल आपण नै परिबे त आई कलर सिंपली आपण माने कंसीडर करंतु द आई कलर द हाइट and the blood group are coded in your DNA is responsible for the DNA एती कहि परिबो मते कहलो सेम प्रोटीन न हेले कोन हबो मते कुह प्रोटीन थिले कोन हबो ना मैम प्रोटीन्स डू वर्क इन द बॉडी लाइक इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स structure transport for this purpose even but they कहि परिबा but they don't store the genetic information as the DNA do lipid kon कहि परिबा ना lipid in the form of fats nothing else the fats are for the energy storage and making the cell membranes not for also the carrying the genetic material or the genetic information but मते कहि परिबा RNA DNA RNA तो RNA अपन को तो सिमिलर लागु थो वर्ड गुडा मते को RNA दैट इज द राइबोस न्यूक्लिक एसिड ओनली सेटा हमें कोठी पाई परिबा ना मैम दिस आल्सो फाउंड इन द सेल्स एज द DNA आल्सो फाउंड मते को RNA इज फाउंड in all the cells but in most organisms most organisms it is not the main genetic material like but हमें कहि परिबा in the case of some viruses like कोन जति आपन को HIV रे पछरिला for example आपन माने नेबे जति HIV भाइरस रे पछरिला तार मेन DNA माने genetic material genetic carrier कहा को हमें कहिबा instead of DNA हमें एठी कंसीडर करिबा ना मैम this is the RNA कहा को ना HIV भाइरस रे केस रे this is the exceptional case that uses the RNA as the genetic material एति कि मने रहिबो कोठी ना सब जगह रे हम कंसीडर करछे DNA as the genetic material as the कोन genetic carrier but only in the case of HIV virus this is the RNA do clear next चला मते को the bond between two amino acids in a protein is called जेते बेले गोटे bond form ये दीटा amino acids रे okay the bond between two amino acids in a protein is called what देखो हमर कोन ऑप्शन अछि ना मैम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड or that is the phosphodiester bond what will be the right answer obviously glycosidic तो हबनी because we know this bond connects the sugars to make the carbohydrates हमें कहि परिबा कि ग्लाइकोसिडिक कोन ना मैम सुगर सहित हमें कनेक्ट करूछे काको ना मैम एकु सुगर सहित कनेक्ट करूचे टू फॉर्म सुगर रु कार्बोहाइड्रेट सेते बेले फॉर्म होची इन दैट केस हमें कहि परिबा दे बॉन्ड तांको बॉन्ड को कोन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहूचे सुगर रु कार्ब्स एति के रिलेटेबल देन मते कहला हाइड्रोजन बॉन्ड कहिबा कि नो मैम हाइड्रोजन कोन पे हबनी बिकॉज़ राइट आंसर कोन हबा ना पेप्टाइड बॉन्ड राइट आंसर विल बी द पेप्टाइड बॉन्ड रमाकांत ओके नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड हबनी काहे कि हबनी कारण हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड अनदर एटम लाइक एटम रे आपण माने ऑक्सीजन नै परंती या फिर नाइट्रोजन भी नै परंती एंड इट आल्सो हेल्प्स to
fold the proteins but doesn't link amino acids कोन directly ये हमको fold करिबारे hydrogen bond help करिवो किंतु directly जते बेला हम relate करूछे सोनल काई इरिटेट करछ तुम त आर्ट्स पढिबो तुम काई ए टॉपिक रे आछछ कहलो ओसीएस रे काई एडा आसीबो तुम सब देखो एही सब टॉपिक ओसीएस रे आसेनी ओसीएस रे जदी तमे सिलेक्टिव नै थिबो तमरा बॉटनी पेपर ता रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री नै थिबो ता रिलेटेड आसीबो सोनल जानी जानी इरिटेट करनी क्लास रे प्लीज डोंट ब्रेक माय फ्लो ओके सो मते को द फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड हमें कहा को कहूचे पेप्टाइड बॉन्ड त आपण माने जानि चंदी दैट इज द COOH हमें कहूचे ही सोनल ओके तो COOH हमें ताकू कहूचे दैट इज द कोन अमीनो एसिड विथ वन अमीनो एसिड्स विथ द COOH ग्रुप react with another amino acid that the NH2 group ता सहित जदि हमें बॉन्ड फॉर्म करूचे that is called the peptide bond but here example हमें कोन कहूचे ना फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड का कहूचे अमीनो एसिड सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड आपण माने एग्जांपल टिक मन रखि देबे मते कुह पेप्टाइड बॉन्ड को आपण माने एग्जांपल लिखि परिबे कि द इंसुलिन इज अ प्रोटीन मेड ऑफ व्हाट ना मेनी पेप्टाइड बॉन्ड सो इंसुलिन को हमें कोन कहूचे ना मैम इंसुलिन इज नथिंग बट द प्रोटीन सो ये जो इंसुलिन नामक प्रोटीन हम बॉडी रे अछि ताहार डेफिशिएंसी रे हम इंसुलिन को फुनी कोन इंजेक्ट करूचे बॉडी रे हमर सुगर हाई हे जाउची दैट्स व्हाई हमें कोन कंसीडर करि परिबे कि मैम ये जो इंसुलिन रहउची बॉडी रे दिस इज फॉर्मड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड कहि परिबा यस मैम मते को फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कहले कोन होबो ना दिस बॉन्ड जॉइंस द न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए एंड आरएनए हम जो न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हुए कहितली सो न्यूक्लियोटाइड सहित डीएनए एंड आरएनए को आपण माने रिलेट करि परिबे न्यूक्लियोटाइड सेते बेले डीएनए रे हला या फिर आरएनए रे जते बेले बॉन्ड फॉर्म करूची सो दिस बॉन्ड इज नोन एज द फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड कोन ना फॉस्फोडाइजेस्टर बॉन्ड इज नोन एज द कोन ना मैम डीएनए एंड आरएनए को कनेक्ट करूथुवा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड मन रहइबो एतिकी चला नेक्स्ट मते को व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज ascorbic एसिड अच्छा ascorbic एसिड कोन कहउजे मैम अच्छा रमाकांत ना ना सोनल मजा करूछ सेंती किछ So which vitamin is also known as the ascorbic acid? Ascorbic acid हमें कहा को कहउची को विटामिन ए को तो बिल्कुल कहबानी विटामिन B12 कहबानी काहे कि विटामिन ए कहा को कहउचे ना विजन पाई विजन एंड फॉर द हेल्दी स्किन हमें कहि परिबा कोन मोस्ट इंपोर्टेंटली आपण माने कंसीडर करंतु अबाउट द विजन दिस इज द विटामिन ए इज रिक्वायर्ड फॉर yes very good example हमें कहि परिबा the deficiency causes the night blindness yes or no yes vitamin B12 हमें कहि परिबा काहा को this deficiency causes the what ना मैम anemia कौन causes करे ना मैम this causes the deficiency causes the anemia yes or no yes ma'am clear very good that helps in the making red blood cells and the nerves then को vitamin C yes guys the vitamin C is the ascorbic acid जोथि पाए कहउछ हमर स्किन रिजुविनेट रुहे स्किन हमर यंग हे कि रुहे यूथफुलनेस देखा जाए so it is the important for the कोन healing wounds also that making the collagen also and this is a protein for the skin and bones too and this is the boosting our immunity so immunity को booster के करे ना vitamin C मन रहिबो एग्जांपल आपण माने नै परिबे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कोन हुए ना मैम स्कर्वी हुए कोन हुए ना स्कर्वी दैट इज अ स्किन डिजीज स्कर्वी हुए एंड हमें कहि परिबा कि मैम हमर जो ब्लीडिंग हमर गम्स रु देखिथि माढ़ी जोटा कहूचे से जरू गम्स रु इंपोर्टेंटली गम्स रु हमें कहि परिबा ब्लीडिंग हुए वीकनेस आसे सेटा कोथि पई ना मैम ए विटामिन सी रो डेफिशिएंसी देन मते कहला विटामिन डी हमें ताकू कोन ना मैम सनशाइन विटामिन बोली जानि छे सो विटामिन डी नॉट ओनली सनशाइन इन द फॉर्म ऑफ विटामिन D3 हमर सन रु मिलुची बट ऑन एंड एवरेज हम विटामिन डी कहि दोचे बट मते कोइ विटामिन डी कोन ना दिस इज help in the calcium absorption and the bone health calcium absorption hela bone health hela या पाई responsible vitamin किए ना vitamin D and यारो deficiency रे कौन हुए ना मैम rickets हुए vitamin D deficiency रे हमरा कौन हुए rickets हुए क्लियर हमर जते देखिथिबो weak हे जाय bone टा बहुत ही soft हे जाय this is due to the deficiency of the vitamin D am I clear चलो नेक्स्ट मते को
enzymes are chemically mate kuh enzymes are chemically what are they the lipids, are they the proteins, are they the carbohydrates, or they are the nucleic acid? What will be the right answer? Lipids kon hei paribo ki ma'am ame enzymes manu ko lipids kahi pariba? Totally nuha, because lipids are the fats that used for the energy storage, not the enzymes. ये मानु को हमें कौन कहि परिबा ना मैम हमको हमें फैट्स कहि परिबा, एंड ड्यू टू द फैट ये हमर कोन ना एनर्जी स्टोर करी की रखे, एनर्जी स्टोर करी रखे. सो राइट आंसर हमें कहा को नेबा? यस ताकू हमें प्रोटीन को नेबा, बिकॉज़ एंजाइम्स आर केमिकली नोन एज द प्रोटीन, एंड एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स that speed of the chemical reaction in the body. आम बॉडी भितर जते भी chemical reactions होची ताकू speed of किए करूची ना due to the presence of the protein inside our body. आमे कहि परिबा कि कोन द amylase जोटा कि हम saliva रे अछि, जोटा कि हम लाळ रे अछि. ओके, सो द amylase digest करे कहा को ना starch into sugar. तो amylase example नहीं परिबे आपण माने amylase digest starch into sugar. जदि पचारा गला amylase कोठी अछि ना मैम that is present in our saliva. Am I clear? Clear तो रमाकांत बुझिबा important. भूल हेले इट्स ओके, भूल हबो ठीक हबो, बट important कोन होची त माने क्लियरली बुझि परछ ना 1960. क्लियर तो हो. कार्बोहाइड्रेट्स हेले आपण माने कोन कंसीडर करछे ना मैम ये तो सुगर एंड स्टार्चेस को हमें डायरेक्टली कहउछे, ये तो एंजाइम्स बिल्कुल हबनी. कार्बोहाइड्रेट्स हेले आपण माने कोन कहउछी कार्ब्स आर जनरली कोन ना मैम सुगर रहउची एंड स्टार्चेस रहउची. क्लियर. न्यूक्लिक एसिड हेले हम कोन कहउछे ना मैम डीएनए एंड आरएनए को रिलेट करि परिबा, जे कि कोन दे आर द इंफॉर्मेटिव थिंग. तो डीएनए एंड आरएनए हेला दे स्टोर द इंफॉर्मेशन, राइट? दे आर नॉट ओनली फॉर द वर्क. क्लियर. चलो नेक्स्ट मते कुआ. बट याको मु कहितली न्यूक्लिक एसिड को आपण माने सेठी कंसीडर करिवे, बट एक्सेप्ट सम स्पेशल आरएनए एंजाइम्स कॉल्ड द कोन ना मन रखा राइजोम्स. काहागु दिस इज द exceptional that is the rhizomes. Am I clear? चलो next मते को the energy currency of the cell is. The energy currency of the cell हम कहा को कंसीडर करू छे मते टिके कहिलो. The options कोन अछि ना DNA that is ATP, RNA और ATP. कहा को हमें कहिबा DNA को कहिबा कि नो मैम बिकॉज़ लिपिड्स DNA ATP. yes मते को DNA ATP सहित कहा को रिलेट करू छे. राइट आंसर दियो. The energy currency of the cell is the energy currency of the cell कहा को हमें कंसीडर करू छे DNA ATP RNA ADP. very good, that is the adenosine triphosphate. नेक्स्ट मते को which of the following is a polysaccharide. polysaccharide हमें कहा को कंसीडर करू छे मते कहिलो. polysaccharide भाबरे कहा को हमें कंसीडर करू छे. टेल मी दैट. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइकोजेन, गैलेक्टोज सब कहि देले अपन माने को टास्क कोन एटा मते होमवर्क रे जणैलो. मते कमेंट सेक्शन एटा त माने को होमवर्क देली. मते कहबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसैकेराइड एंड राइट आंसर विथ द डेफिनेशन कोठी कोठी अपन माने को मिले मते कहबो. जो माने परे भी लैटर ऑन देखिबो अपन माने कोन recording देखिबे for those also. मते को which enzyme breaks down the starch into maltose. को एंजाइम हमर स्टार्च मानकू coenzyme amaro starch मानकू break down कर in the form of maltose. Right answer, come on Ramakant. Lipase, amylase, maltase, or that is the protease. What will be the right answer? What will be the right answer? The which enzyme breaks down the starch into maltase? What is the right answer?
Sorry for the inconvenience. Okay. So right answer कौन होगा ना मैम amylase. So the enzyme breaks down the starch into maltose. ताको हमें कौन कहूचे ना amylase कहूचे and sometime हमें ताको कौन ना मैम diastase भी कहूचे. कौन कहूचे ना diastase भी कहूचे. Am I clear? Clear? Very good. चलो next. मते को which macromolecule is the main storage form of energy in animals? प्रोटीन ग्लाइकोजेन सेल्युलोज और डीएनए जेते बेले मेन मैक्रोमोलेक्यूल फॉर एनर्जी स्टोरेज पचारिबो कोउथिरे ना मैम एनिमल रे पचारिबो मोस्ट इंपोर्टेंटली कोन हबो ना लिपिड्स और फैट हबो लिपिड्स और फैट्स गाइस हबो बट इन सम केसेस जदि लिपिड्स एंड फैट्स सेमति केठी आपण मानकर कोन ना मैम ऑप्शन रे ही नाही देन वी कैन गो थ्रू द ग्लाइकोजेन का सहित ना मैम ग्लाइकोजेन सहित हमें जाई परिबा am I clear very good चलो next मते को the pH next को the pH of human blood is approximately the pH of human blood is approximately केते रहउचे 5.5 6.8 7.4 or that is 8.5 केते consider करछे ना मैम 7.45 because always this is 7.35 to 7.45 पर्यंत vary करे that is the approximately 7.4 को हमें consider करूछे is that clear next मते कुआ which of the following contains the genetic code like amara genetic code ku kiye contain करे मते कुआ which of the following contains the genetic code or the genetical character किछि भी आपण मानकु पछारिला ताको आपण माने कंसीडर करूछंदी कहा सहित मते कुआ the genetic code or genetic character very good so transfer होचे from the ancestor to the offspring that is the DNA or the deoxyribose nucleic acid ता सहित हमें जाई परिबा yes मैम जाई परिबा then मते कुह अरे 10 नंबर कलिनी की हां 10 नंबर कली yes right answer कौन हबो ना मैम this is DNA lipid काहे के अपन कारण lipid को ऑलरेडी अपन मानु कोन कहि ना मैम फैट्स हैला एंड ऑयल्स हैला ता सहित अपन माने कंसीडर करिवे काहा को ना मैम लिपिड को कंसीडर करिवे दैट इज द जदी मेन जदी हमें कहि बारे लिपिड रो मेन्स ऑफ कोन ना मैम से एनर्जी स्टोर करि के रखी दैट इज द फैट इन आवर बॉडी इज नथिंग बट द एनर्जी एंड फॉर्मिंग द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो द फॉस्फोलिपिड्स हैला एंड हमर कोलेस्ट्रॉल हैला या सहित भी अपन माने कैरी करि परिबे am I clear very good so DNA is the deoxyribose nucleic acid and it is the instruction manual of the life clear and हमें कहि परिबा कि DNA रो कोन कोन ना चारिटा नाइट्रोजनस बेस थाए व्हाट आर दोस मते कहिलो चारिटा नाइट्रोजनस बेस थाए जोटा कि RNA रे गोटे सेटा रिप्लेसमेंट थाए कोन थाए ना मैम A T C and C and what is this ATGC ना हमें कहि परिबा कि this is the adenine what adenine amine guanine और this is cytosine and a टी बदल रे आरएनए रे कोन थाए ना यू थाए ओनली थायमिन चेंज हे के जाय कोन ना यूरासिल ओके so this is ATCG and RNA रे कोन हुए ना AUCG हे जाय क्लियर वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को द coenzyme required for carboxylation reaction is the coenzyme मोर बहुत भूल हे जाउ छे मैम के थरोली आंसर कले एटा बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपण माने पे आज जानि स्टिल भूल होची जदी कोन कर परिबा को रमाकांत चैतन्य रे तो सब ठीक होची तमरा केमती भूल हे जाउ छी तो को मते व्हाट विल बी द राइट आंसर
नेक्स्ट मते को नेक्स्ट the coenzyme required for carboxylation reactions is देखो carboxylation reaction जते बेले हमें कहूची coenzyme माने कोन मते कुआ what is the mean of coenzyme now this is a helper molecule that means that binds to an enzyme and helps it to do the jobs ताको हमें कहूचे कोन that is the coenzyme. So a coenzyme सहित हमें कहा को relate करूचे the coenzyme required for the carboxylation reaction is what ना मैम this is the biotin और याकू कौन कहूचे रमाकांत ना सी नहीं राइबोफ्लाविन नहीं ताकू कौन कहूचे ना मैम this is the biotin. Why this is biotin ना हमें जानिचे biotin is nothing but the vitamin B7 को हमें biotin कहूचे कहा को ना vitamin B7 को biotin को. Yes or no? Yes ma'am. So this is known as kona na when mane rakho when biotin helps the enzymes that is what now that add the that is the carbon dioxide that is what a carboxyl group apan mane consider karantu to form the molecule. For example mane apan mane nei paribe the pyruvate carbohydrate or the pyruvate carboxylase carboxylase को आपण माने नहीं परिबे needs the biotin to change the pyruvate into the oxaloacetate रे convert करिबा पई and without biotin कोन होबो now without biotin the fatty acids and the glucose metabolism would not work properly. So for the fatty acids or for the proper metabolism of the body हमें कोन करूचे ना मैम this is considered as the biotin we are taking in. क्लियर हमर नियासिन हेले कोन कहूची ना विटामिन B3 एटा जेंति B7 हला ना सेटा हमर कोन हबो ना विटामिन B3 को हमें कंसीडर करूची. Am I clear? So that makes the NAD plus and NADP ए जो NAD plus NADP कोन कहूची ना which carry the electrons in the redox reaction जते बेले redox reaction कहूची सेते बेले इलेक्ट्रॉन ताकू कैरी करूची हमें कंसीडर करूची द नियासिनामाइड. देन कहला राइबोफ्लाविन हेले कोन कहूची ना दिस इज द विटामिन B2 दैट इज FAD सुनिचो FAD and FMN सुनिचो दैट द इलेक्ट्रॉन कैरीज करे ये कोन करे ना रिडक्शन करे राइबोफ्लाविन ने कोन हुए ना मैम इलेक्ट्रॉन कैरी करे and ये हमर कोन इलेक्ट्रॉन जदी कैरी करछ ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिएक्शन रे होले रिक्वायर होथबो सो यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर कहि परिबो. थायमिन हेले आपण मान जान सदी कोन ना थायमिन हेले मैम विटामिन B1 को हमें कहूचे विटामिन B1 को हमें कंसीडर करूचे एज अ थायमिन. yes or no? Yes ma'am that works as a thiamine कोन थायमिन pyrophosphate that is ताकू कंसीडर आपण माने करि पारुथबे somehow सुनिथिबे TPP ए TPP कोन ना हमर कोन थायमिन pyrophosphate. yes or no? This is important in the कोन ना decarboxylation ने यार important अछि. decarboxylation माने कोन ना removing of the carbon dioxide not adding of the carbon dioxide. मन रहिबो deficiency जहार हमर removing of the carbon dioxide और carbon dioxide deficiency रे कोन disease हुए ना मैम beriberi disease हुए. मन रखिबो एतिकी very good. चला मते next को the sugar present in DNA is DNA रे हमर जो सुगर प्रेजेंट रुहे गाइस से सुगर को हमें कोन कहूचे राइबोस तो बिल्कुल कहबानी कारण राइबोस तो आपण मन जानि संती राइबोस न्यूक्लिक एसिड दैट मींस ये आरएनए रे प्रेजेंट हुए तो डीऑक्सी राइबोस अछि माने कोन ऑब्वियसली यही डीएनए रे प्रेजेंट रहउथबो. क्लियर am I clear? Very good. So deoxy that is sugar in the DNA and it's deoxy because it lacks an oxygen at the second carbon जेतले सेकंड कार्बन फॉर्म करूची बॉन्ड फॉर्म करथुबो से टाइम रे हमर लैक हबो गोटे डीऑक्सी ग्रुप दैट्स व्हाई हम ताको कंसीडर करूचे दिस इज नोन एज द डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड दिस मेक्स द डीएनए मोर स्टेबल देन द आरएनए. नेक्स्ट मते को हीमोग्लोबिन इज अ हीमोग्लोबिन को हम कंसीडर करूचे दिस इज अ व्हाट हीमोग्लोबिन इज अ व्हाट मन रख डीएनए रु आपण माने डीऑक्सी राइबोस मन रखियो आरएनए रु ओनली राइबोस जोथि डी अछि डीऑक्सी लगे देबो डी नाही ओनली आर लगे देबो आर राइबोस हे छिबो. नेक्स्ट मते को द हीमोग्लोबिन इज अ दिस इज अ लिपिड दिस इज अ प्रोटीन दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट और दिस इज अ न्यूक्लिक एसिड. लिपिड त हबनी कारण ऑलरेडी आपण मानु कहि दिछि कोन लिपिड्स आर द फैट्स सो प्रोटीन हे परिबो. यस गाइस द प्रोटीन कैन बी प्रोटीन हे परिबो कारण हमें जानि छे हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोब्युलर what na protein that found in the RBC that found in the red blood cells. Yes or no?
Yes, ma'am. And it is made up of what? Now 4 units is containing a home group. आमे कहि परिबा different type of a hemi group हमर कोन ये carry करूची, right? Example अपन एक परिबे, when you breathe the oxygen enters the blood and hemoglobin carries it. Yes or no? Yes, ma'am. Next mate को the carbohydrate consider करूचे ना sugar and the polysaccharides रे आमे को कोन ना ma'am aquame consider करूचे as the form of sugar or as a polysaccharide. Nucleic acid हेले कोन होची मैम DNA and RNA. Clear? Very good. चलो next मते को the process of conversion of glucose to pyruvate is called. The process of conversion of glucose mate ko what will be the right answer? Na ma'am, the process where the conversion हुए हमर कोन ना मैम ग्लूकोज कोठी को ना पाइरुवेट को हुए ताकू हमें कोन कहूचे नथिंग बट द ग्लाइकोलिसिस. कोन कहूचे ना मैम ग्लाइकोलिसिस. मैम आपनकर ना कोन मो ना हला सुदीप्ता सिमरन पंडा. ओके चलो सो द ग्लाइको मीन्स हमर कोन होची ए जो ग्लाइकोलिसिस अछि द ग्लाइको वर्ड मीन्स हमर कोन होची ना मैम सुगर. ग्लाइको मीन्स कोन होची ना सुगर, whereas lysis माने कोन ना मैम this is the breaking. Lysis means कोन ना breaking. So the sugar breaking into the glucose to pyruvate हमें कहि परिबा कि the glycolysis is the 10-step pathway. एटा मन रखो जदि पचारिबा आपन एग्जाम रे which process is the 10-step pathway, this is the glycolysis. So this is the 10-step pathway. 10-step pathway. Clear? That breaks the glucose जोटा कि 6 carbon थाए 6 carbon number थाए ना glucose रे into 2 pyruvate molecules, that is 3 carbon of what ना each 3 carbon हमर present रहबा दरकार. Example अपन नै परिबे कोन ना छाड़ू but हाँ when a muscle work hard the glycolysis provides the quick energy even without oxygen हमको provide करि परिबो. आपण माने सेटा जिम रे perfect example नै परिबे. Krebs cycle कहले आपण माने कोन कहबे ना मैम Krebs cycle only happens in the case of mitochondria. So Krebs cycle को आपण माने कहा सहित ना mitochondria सहित relate करि परिबे. Krebs cycle को mitochondria रे आपण माने relate करि परिबे. That is pyruvate माने form of glycolysis is further broken to carbon dioxide and energy. ता सहित relate करि परिबे. मते कुह हमर कोन ना that is the gluconeogenesis को हमें कोन कहिबा. Gluconeogenesis को कोन कहिबा ना that is the opposite of the glycolysis. That means it makes the glucose from the non carbohydrate sources. That means it is the opposite of what? Opposite of the glycolysis. Means ये हमर non carbohydrates thing रू हमर ये form हेई परिबो. Am I clear तो चलो next मते कहिबो which lipid forms the main component of cell membrane. कोटा को हमें main component of cell membrane consider करूचे. Which lipid forms the main component of cell membrane? Cholesterol तो हबनी केबे भी आपण माने भी जानचंती cholesterol is found in the membrane but in a smaller amount. So main component तो ये बिल्कुल हबनी बिल्कुल. So main component कौन हबा मते कुआ? That is the phospholipids. Yes रमाकांत एई थरो तम ढाबाटा ठीक जगह रे बाजी ना कि हां वेरी गुड. श्रीकांत very good evening. बहुत जल्दी क्लास पे आसी गला. Okay. So phospholipid is what? Now this is phospholipids make the basic structure of the cell membrane. जो थरे कोन ना two types रा part थाए. कोन two types रा part थाए. One is the head and part कोच कोन head. One is the head and another is the tail. Head रा में कोन कहूचे? गोटे head and another is the tail. So head रे में कोन consider करिबा ना like the water into the hydrophilic गोटे हबो head रे हाइड्रोफोबिक हेले हमें कहबा ट्रेल ले. सो जेते बेले हेड कथा कहले कोन रखिबो ना मैम दिस इज नथिंग बट द हाइड्रोफिलिक.
टेल कहले कौन कहबो दिस इज आल्सो नथिंग बट द हाइड्रोफोबिक this is nothing but the hydrophobic am I clear very good so they arrange themselves into a bi-layer ame taku consider korche and the head faces the outside and the inside the water मन रहिबति की and the tail hide in the middle next mate kuha the base not found in the RNA is mu kahithili kona मन रखिबो ना man first one is the ATCG next is the AUCG जोटा की रहला कोथरे ना this one is the DNA and this one is the RNA right so mate consider कर कोथरे रहिबो नाही कोटा रहिबो नाही मते कुआ चैतन्य मैम मते ढाबा तुमको ढाबा कहूनी तुमको कहीं ढाबा कहबी तुम तो पूरा रेस्टोरेंट तुम पूरा 5 स्टार रेस्टोरेंट तुम कोठी जीवो तुमको हम द क्राउन कहि देली तो ताज कहि देली तुम ढाबा मारुच कहली तुम तुमको ढाबा केबे कहि परिबेनी चलो ओके यस द राइट आंसर कोन हबो ना मैम द बेस फाउंड इन आरएनए रे फाउंड हेले ताकू कोन अच्छा उल्टे देली सॉरी एटा को उल्टे देछि राइट हमर थायमिन टा अछि कोन प्रेजेंट ना डीएनए रे ठीक तो अछि सो द बेस नॉट सॉरी नॉट फाउंड पचारिछि दैट मींस हमें कोन एठी नॉट फाउंड पचारिछि त माने यूरासिल काई मारुछ नॉट फाउंड पचारिछि दैट मींस जोटा हमर थायमिन टा डीएनए रे अछि सेटा आरएनए रे नथिबो सो राइट आंसर कोन हबो चैतन्य यूरासिल केमिति हबो एठी फाइंड पचारनी एठी पचारिछि नॉट फाइंड ओके वेरी गुड चलो नेक्स्ट मते को व्हिच अमीनो एसिड कंटेन्स द सल्फर अच्छा को अमीनो एसिड रे आपण मानकर सल्फर हुए मते टिके कहिलो व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन द सल्फर टेल मी व्हिच अमीनो एसिड्स कंटेन द सल्फर हमर कोन अछि ना ग्लाइसिन हबो कि नो मैम दैट इज द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड दैट वी नो एंड द साइड दैट द चेन इज जस्ट कोन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे इन द केस ऑफ सल्फर बट मते कुह सेराइन हबो कि सेराइन हैज एन अल्कोहल ग्रुप एंड अल्कोहल कोन ना -OH हमें कहूचे और द अल्कोहल बॉन्ड हमें कहूचे दैट इटा हमर हबो कि नो मैम दिस इज ग्रुप इज इनसाइड द चेन नॉट इन द सल्फर तो हमें राइट आंसर कोन कहबे ना मिथायोनाइन कोन हबो ना मिथायोनाइन ग्रुप विल बी द राइट आंसर am I clear वेरी गुड हाँ एथर टिके रही कि देखी मारो मैडम टिक मारी सारंतु तापर हमें आंसर देबो आ ना से करो लेट रे जानलो किंतु ट्रिक टा धरछ ठीक धरिछ so the methionine कोन कहूचे that contains a sulfur atom in its side the chain and importantly हमें कहि परिबा as a start codon amino acid in the protein synthesis example आपण माने परिबे every new protein in your body begins with a the methionine clear चलो next मते को विटामिन डी इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी हमर रिस्पांसिबल हेइ थाए the vitamin D is mainly responsible for the metabolism of what iron पाई तो हबो नाही iron पाई कोन कहै that controlled by other proteins like हमर कोन कहै परिबा that is the transferrin not by the vitamin D हेले कोन that is the calcium आपण मन देखि दिए पैकेज्ड मिल्क रे हमर fortified vitamin D आसुची vitamin A आसुची vitamin C आसुची हम कहि परिबा कि the deficiency in the children causes the rickets and the leg हमर कोन धीरे धीरे bent हे जाय देखि दिबे पिक्चर आपण मन भी काढी परिबे the rickets disease आपण मन क्लास जे छोटो पिलांकर ए नीठू पूरा तळकू गोडटा बंका थाय पूरा एम्प्टी हेकी थाय राइट चलो नेक्स्ट मते को एंड as it a last question so the bond that connects the nucleotides in DNA is the bond that connects the nucleotide in the the bond that connects the nucleotides in the DNA is what मैम फास्ट मु कहली सोनल फिर से हां एया ही करा कोन करियो सो द पेप्टाइड बॉन्ड हेले कोन कहबो ना that contains the amino acids in the proteins not in the nucleotide so peptide bond हेले आपण माने ऑलरेडी कहिथिली मैम याकू आपण माने प्रोटीन सहित कनेक्ट करिवे हाइड्रोजन बॉन्ड हेले कोन हबो ना it has a DNA paste together like A सहित T A सहित की ना मैम A सहित T फॉर्म करे एंड G सहित की ना C फॉर्म करे दिस इज द पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड याकू हमें कहूचे ओके कोन एडेनाइन सहित थायमिन और गुआनाइन सहित कोन साइटोसाइन हमरो फॉर्म करे राइट
very good Santilata. So right answer कौन हबो? Very good. Right answer कौन हबो? That is the phosphodiester bond. Already कही सारिची that joins the 3 carbon of one sugar, 3 carbon of one sugar to the 5 phosphate of the next sugar. मन रहिबो एतिकी that makes the strong backbone of the DNA and RNA. For example आपण माने नै परिबे that if a phosphodiester bond break, the DNA falls apart. रही जाए ना नहीं को मते यस मैम आयोनिक बॉन्ड हबनी बिल्कुल हबनी बिकॉज़ दिस इज द वीक बॉन्ड बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल जदि आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो व्हिच इज अ वीक बॉन्ड बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल्स देन दिस इज द आयोनिक बॉन्ड दैट नॉट यूज्ड इन द डीएनए मॉलिक्यूल डीएनए हमर कोन बैकबोन रे भी हमर यूज हुए नाही हाँ हाँ आज पाई एते की थाउ नेक्स्ट क्लास आउ देखिबा लाइक आहुरी क्वेश्चन अछि बट एटा हमर सरप्लस हे जिवो 20 टा आपण बुझंतु आ एटा को ही रिवीजन करबे am I clear very good तो चलो थैंक यू सो मच गाइस अगेन टिके जो माने भी सीबीजेड रा पिला अछंती जो माने बटनी रिक्वायरमेंट अछि ताको सते टिके बैच को शेयर करो क्लास को लाइक तो 5-6टा पिला अछ कोन त मानु कहि बट स्टिल जते भी तमरो फ्रेंड सर्कल ले तमरो कांटेक्ट रे अछंती सांग मानु को टिके चैनल शेयर करो से माने भी क्लास रे प्रेजेंट रहंतु क्लास ता टिके इंटरेस्टिंग लागि ठीक अछि चलो थैंक यू सो मच हैव ए गुड डे थैंक यू गाइस थैंक यू अरे कौन